Rahman Rahim. Today we'll be discussing the pathogenesis of diabetes mellitus, type 1 and type 2 both. So I would request all the students to focus on this because other than your exam and your degree and your MBBS, it's a very, very pertinent, relevant topic, and it's almost a household discussion nowadays. So you need to have very good knowledge, being a doctor, being from a medical profession, about diabetes. I've simplified this overall lecture in this presentation. Inshallah, by the end of the lecture, you will have full command on the details that I will share with you. Okay. Now, let's start off with a question, as I usually do. Here's a stem which basically says essential feature for the diagnosis of diabetes mellitus. Now you have 5 options. Can anybody answer? Or should I say the most essential feature? C. Okay, all of you have answered C. ठीक है बेटा, ठीक है. So, in one word, when you have to answer or you have to define diabetes mellitus, the one thing that is always there, it is hyperglycemia. Okay. That's right. Okay. It's not necessary that hyperinsulinemia is there every time. It's not necessary that insulin deficiency is there every time, or glucagon deficiency, or anti-islet cell antibodies. But hyperglycemia is the major complaint. That's how basically you diagnose diabetes mellitus. Okay, so hyperglycemia will always be there. Now, by definition, diabetes mellitus, in 2 words, is a state of chronic hyperglycemia. ठीक है, बाकी आप लोगों को बुक्स पे, इंटरनेट पे बहुत सारी डेफिनेशंस मिल जाएंगी. इट्स अ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर एंड ब्ला ब्ला ब्ला. ठीक है, इन सिंपल 2 words, chronic hyperglycemia. Deficiency of insulin is not an essential feature of diabetes mellitus. ठीक है, जरूरी नहीं है कि इंसुलिन आपका deficient हो, which we look in the subsequent slides what other possibilities are there. In fact, many type 2 diabetes mellitus patients are hyperinsulinemic. At times there is more insulin secretion, but the problem is at the level of the receptors where it's unable to act properly. So there are different types of diabetes mellitus, obviously. And the common thing is, again, I'm repeating, it's hyperglycemia. Now, there's a whole list of causes of diabetes mellitus and types of diabetes mellitus. You don't need to memorize everything over here. Just remember the type 1. Type 1, majority of it, of the researchers who have done research on this, they basically believe it occurs mainly due to immune mediated. It can be idiopathic as well. It can be environmental as well. Again, type 2 diabetes mellitus, which we'll discuss in details. There can be genetic defects as well. There can be exocrine pancreatic defects, which can cause diabetes mellitus, like chronic pancreatitis, like any neoplasia, any cancer. Hemochromatosis is another cause. So, and endocrinopathies along with diabetes mellitus, you may have thyroidism, you may have pheochromocytoma, you may have Cushing syndrome. Infections obviously can be an underlying cause, underlying environmental cause, infectious cause. Drugs may, if you answer drugs in your exam and the examiner asks you what type of drugs, at least बेटा आप लोग ये जरूर बोलना. अगर आप steroids भी बोल दोगे, you will get the marks. Okay, steroid is one of the main drugs that causes diabetes mellitus, that can lead to diabetes mellitus. Genetic syndromes are not that important, but you need to know this. You need to know the basic top 2 and other type 1, type 2 endocrinopathies like acromegaly, Cushing syndrome, hyperthyroidism. ये भी हम डिटेल में कर लेंगे, परेशान ना हो, ठीक है. And drugs obviously, primarily steroids, जिसकी वजह से होता है आपको diabetes mellitus. In a nutshell, I would say, other than the type 1, type 2 genetic causes, then and the other idiopathic causes, the major issue that can eventually lead to diabetes mellitus is any disorder of the pancreas. ठीक है, pancreas में कुछ भी होगा, it can cause diabetes mellitus in the future. That would be secondary diabetes. It can be due to pancreatitis, it can be due to cystic fibrosis, it can be due to hemochromatosis or any malignancy. ठीक है. Now, classification of diabetes. Okay. Now, type 1 diabetes, it mainly occurs due to beta cell destruction. Type 2 diabetes, which has progressive insulin secretory defect.
एंड देन वी हैव अदर स्पेसिफिक टाइप्स, ठीक है, वो मैं आपको भी बताता हूँ, ठीक है. नाउ इन एन एग्जाम, व्हेन यू देयर इन एग्जाम, द एग्जाम क्वेश्चन यूजुअली स्टार्ट्स ऑफ इन डायबिटीज, ऑब्वियसली इट मेनली स्टार्ट्स ऑफ विद द डेफिनेशन ऑफ डायबिटीज मेलाइटिस, दैट कैन यू कैन मेमोराइज फ्रॉम एनी बुक, और यू कैन इवन से इट्स क्रॉनिक हाइपरग्लाइसीमिया, ठीक है. उसके अंदर पे प्रोटीन्स भी डिफेक्टेड हो सकते हैं, आपके आपके कार्बोहाइड्रेट्स भी अफेक्ट होंगे, लिपिड्स भी अफेक्ट होंगे, ठीक है. देन द एग्जामिनर वुड कम टू द क्लासिफिकेशन ऑफ डायबिटीज. ओके, now usme type 1 type 2, obviously you have to say it over there. Then there are other specific types of diabetes: genetic defects in beta cell function or insulin action, disease of the exocrine pancreas, or drugs or chemical induced. This is basically a summary of the previous slide, in which there were dozens of causes there. This is simplified in this slide. Primarily you have to know this classification, these causes. Okay, type 1 diabetes, type 2 diabetes, genetic ones, disease of the exocrine pancreas, and drugs. This is an exam question. Okay, in this presentation I'm telling you the first exam question. Okay, type 1, type 2, genetic, due to exocrine defects, and drugs and chemicals. Okay, 5 main ones. And then lastly, gestational diabetes mellitus. Okay, gestational diabetes, obviously diabetes that has emerged during pregnancy or diagnosed or identified during pregnancy. ठीक है, so this is a very simple classification. I have simplified the previous chart in this slide. ठीक है, इस पे भी अगर आप ये बोल दोगे एग्जाम में, इंशाल्लाह you will get full marks. Okay, now type 1 is an autoimmune disease characterized by pancreatic beta cell destruction, and the most important part, an absolute deficiency of insulin. Okay, there is absolutely no insulin in the body. It accounts for approximately 5 to 10% of all cases, and is the most common subtype diagnosed in patients less than 20 years of age. But nowadays it can be identified, it can be diagnosed at a later age as well. Similarly, type 2 diabetes nowadays can be identified or diagnosed at an earlier age as well. So it can be vice versa. ठीक है, तो जरूरी नहीं ऐसा हो, mostly. ठीक है, लेकिन type 1 diabetes is an autoimmune disease characterized by pancreatic beta cell destruction. The part that you have to memorize or remember the most is absolute deficiency of insulin. What does that mean? Then you have to be on exogenous insulin for the rest of your life. Okay, हमेशा इसको लेना है आपने. While on the other hand, type 2 is caused by a combination of peripheral resistance to insulin action and an inadequate secretory response by the pancreatic beta cells, which is called relative insulin deficiency. So in type 1, basically there is absolute insulin deficiency. In type 2, both can be there. There can be insulin resistance or there can be decreased insulin production. Approximately 90 to 95% of diabetics have type 2 diabetes, और families में बहुत common होती है. If there is, God forbid, it's present in your family, then over the age of 35, 30, आपके high chances हो जाते हैं that you may also end up having type 2 diabetes mellitus. Vast majority are overweight, but again, this is not 100% rule that every overweight patient will have it or every type 2 diabetic is overweight. ठीक है, lean individuals में भी होता है. Classically considered adult onset, the prevalence of type 2 diabetes in children and adolescents has been increasing. It's on a high rise. Okay, nowadays even type 2 diabetes is occurring in young individuals, young adults. Okay, not only type 1. Now, what happens in the pathogenesis of type 1 diabetes mellitus? Type 1 diabetes is an autoimmune disease, as we studied, in which islet cell destruction is caused primarily by immune effector cells reacting against endogenous beta cell antigens. Like most of the immune disorders, what happens? There is a self-antigen in your body, due to which antibodies are formed against the self-antigen, and it destroys your islet cells. Obviously, in the pancreas, फिर आप destruction हो जाएगी. There would be absolutely no insulin production. It most commonly develops in childhood, manifests at puberty, and progresses with age. It can develop at any age, including late adulthood. The previously used term juvenile diabetes is now considered inaccurate क्योंकि अब ये late age में भी आ जाता है, late adulthood में भी आ जाता है. So don't use the term juvenile diabetes or don't get confused by juvenile diabetes. Okay. The primary thing is there is an absolute exam में भी जब question होगा, कोई stem बना हुआ होगा, if there will be an MCQ, it will usually start off like this: a young individual who was on exogenous insulin. इस तरह से क्वेश्चन आएगा, तो आपको वहीं पे कैश मिल जाएगा that it is type 1 diabetes mellitus, कि वो young individual भी है, वो absolute insulin deficiency पर है, वो exogenous insulin ले रहा है. ठीक है, so अच्छा, without insulin they develop serious metabolic complications such as ketoacidosis and coma.
अभी कॉम्प्लिकेशंस को हम बाद में देखेंगे, ठीक है। एज विद मोस्ट ऑटोइम्यून डिजीज, द पैथोजेनेसिस ऑफ टाइप 1 डायबिटीज involves an interplay of genetic and environmental factors. Now, how to answer this in your exam? Remember this, beta. Don't get confused कि कोई पर्टिकुलर कॉज ही आपको बतानी है, उस पर मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। जस्ट जनरलाइज कॉजेज आप बता दोगे, इट्स एन ऑटो, इट कैन बी autoimmune, it's an autoimmune disorder, it can occur due to genetic and environmental factors as well. Even if you answer this environmental, genetic, autoimmune in the pathogenesis of type 1 diabetes, you will get full marks inshallah, ठीक है। You don't have to go into all the genetic diseases and everything, ठीक है। You don't have to name every single disease in your exam, just the basic part, okay। Now, genetic susceptibility obviously is there. It happens in both type 1 and type 2. Of these, the most important locus is the HLA gene cluster on chromosome 6p21, which according to some estimates contributes as much as 50% of genetic susceptibility to type 1 diabetes mellitus. Just answer कि HLA clusters are involved in this if the examiner goes in depth, ठीक है। Otherwise, you just have to say genetic causes, okay। 90 to 95% of Caucasians with this disease have either an HLA-DR3 or DR4 haplotypes. Environmental factors में, as I told you, there can be infections over there. Nature of these environmental influences still remains an enigma. अभी भी इस पे कोई confirmatory बात वैसी नहीं है. Although viral infections have been suggested as trigger for development, neither the type of virus now nor how it promotes islet cell specific autoimmunity is established. So there is no established fact as such, okay। इस वजह से मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, एग्जाम में आप सिर्फ जेनेटिक बोल दो, एनवायरमेंटल बोल दो, इंशाल्लाह you will get your marks, okay। Studies have suggested that there can be molecular mimicry or there can be different viruses which are involved, जिसकी वजह से आपका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। क्लासिकल मैनिफेस्टेशंस क्या है ना, दैट इज इंपॉर्टेंट, ओके। हाइपरग्लाइसीमिया एंड कीटोसिस. It occurs though in late in course after more than 90% of beta cells have been destroyed. Okay, the bad part of diabetes, especially type 1 diabetes, is the unfortunate part is usually it's diagnosed at a stage when almost 80-90% of the beta cells are already destroyed. So there is no way back from diabetes mellitus. ठीक है, आपको हो गया है तो वो कभी आप नॉन डायबिटिक अब कभी नहीं होंगे. The only possible solution now is to control diabetes. ठीक है, उसकी मैनेजमेंट होती है, लेकिन टाइप 1 डायबिटिक विल नेवर बिकम अ नॉन डायबिटिक. ठीक है, क्योंकि डायग्नोज ही उस वक्त होता है जब ऑलमोस्ट 90% ऑफ द बीटा सेल्स आर ऑलरेडी डिस्ट्रॉयड. ठीक है, द पेशेंट विल एंड अप इन द इमरजेंसी विद सिवियर हाइपरग्लाइसीमिया और कीटोसिस. ठीक. On the other hand, type 2 diabetes is a complex disease that involves an interplay of genetic and environmental factors. As I told you before, genetic और environmental factors दोनों में होते हैं. ठीक है. Most important environmental risk factor for type 2 diabetes is obesity, particularly central or visceral obesity. So obesity patient हो या metabolic syndrome किसी को हो, so उनके अंदर they are already at high risk. Can anybody answer what is metabolic syndrome? Can anybody tell me the basic parameters that you check to diagnose a metabolic syndrome, a patient with a metabolic syndrome? High BMI, very good. Maham. Obesity, चलो ठीक है. Obesity, hyperglycemia भी इतना नहीं होता. Obesity in a way you have to basically check the waist circumference. ठीक है, वो फीमेल्स का डिफरेंट होता है, मेल्स का डिफरेंट होता है. ठीक है, तो वेस्ट हो गया है आपका. ठीक है, हाइपरग्लाइसीमिया तो होता है, हाइपरकोलेस्ट्रोलेमिया वेरी गुड, हाइपरलिपिडीमिया होता है इसके अंदर, और हाइपरटेंशन. आई वाज वेटिंग फॉर दिस वन. ठीक है, तो ये 5-6 फैक्टर्स होते हैं जो आजकल अनफॉर्चुनेटली बहुत कॉमन है, इवन पाकिस्तान में भी है, वेस्ट में भी बहुत कॉमन है. ठीक है, कलेक्टिवली इट इज कॉल्ड मेटाबॉलिक सिंड्रोम. ठीक है, तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम के जो पेशेंट्स होते हैं इनके अंदर बहुत चांसेस होते हैं दे कैन हैव डायबिटीज इन द फ्यूचर, और दे मे हैव हिडन डायबिटीज, बिकॉज हमारे पास लोग टेस्ट उतने करवाते नहीं. जब वो टेस्ट के लिए आते हैं सडनली दे आर डायग्नोज्ड डायबिटीज मेलाइटिस. ठीक है, सो obesity is obviously an important environmental risk factor. Greater than 80% of individuals with type 2 diabetes are obese, and the incidence of diabetes worldwide has risen in proportion to obesity. But I am again repeating, ये ऐसा नहीं है कि दुबले आदमी को या कोई बहुत ही नॉन ओबीस पेशेंट है उसको नहीं हो सकती डायबिटीज टाइप 2, उसको भी हो सकती है. ठीक है, बट ग्रेटर देन majority of them are obese. Metabolic defects in diabetes. 2 cardinal metabolic defects that characterize type 2 diabetes are decreased response of, as I told you in the second slide, ठीक है,
decreased response of peripheral tissue, especially skeletal muscles, adipose tissues, liver, insulin, इनका क्या होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है वहां पे. अच्छा, then the second thing is insulin secretion is inadequate. The amount of hyperglycemia that you are having, आप उतनी इंसुलिन नहीं सीक्रेट कर पा रहे हो, तो उसको मैनेज ही नहीं कर पा रहे हो obviously, but natural that glucose will prevail in the blood, would be present in the blood, causing all the complications and all the hazards that are related to diabetes mellitus. ठीक है, तो टाइप 2 पे जब आप आओगे, you will start answering the examiner like this. There are genetic causes, there are environmental causes. Amongst the environmental causes, obviously obesity is a major factor. ठीक है, what are the basic metabolic defects? अगर एग्जामिनर आपसे पूछता है, then you have to say insulin resistance और बीटा सेल डिसफंक्शन या inadequate insulin secretion भी कह सकते हो आप. ठीक है, so these are the basic two mechanisms that leads to diabetes mellitus, type 2 diabetes mellitus. Now, insulin resistance is the failure of the target tissues to respond normally to insulin. ठीक है, रेजिस्टेंस बाकी हार्मोन्स के लिए भी होती है. देयर कैन बी रेजिस्टेंस टू पैराथायराइड हार्मोन्स एज वी डिड इन द लास्ट लेक्चर. ठीक है, देयर कैन बी रेजिस्टेंस टू थायराइड हार्मोन्स. ठीक है, जहां भी रिसेप्टर्स का इशू आएगा वहां पे रेजिस्टेंस हो जाती है. लिवर, skeletal muscles and adipose tissues are the major tissues where insulin resistance manifests in abnormal glucose tolerance. ठीक है, अब होता क्या है, इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से क्या होगा, इट रिजल्ट्स इन फेलियर टू इनहिबिट एंडोजेनस ग्लूकोज प्रोडक्शन इन द लिवर व्हिच कंट्रीब्यूट्स टू हाई फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल्स. जब इंसुलिन ही नहीं होगी, ऑब्वियसली आप ग्लूकोज प्रोडक्शन को कंट्रोल नहीं कर पाओगे, इट विल लीड टू हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल्स. देन सेकेंडली, failure of glucose uptake and glycogen synthesis to occur in the skeletal muscles following a meal, which contributes to high postprandial glucose levels also. अभी मैं आपके laboratory evaluation पे आऊंगा, then I will ask you the significance of fasting and the significance of random blood glucose levels. Okay. Third, failure to inhibit lipoprotein lipase in adipose tissues. अब क्या होगा, जब आप lipase को inhibit ही नहीं कर पा रहे हो, what will happen? Leading to excess circulatory free fatty acids, which in turn amplify the state of insulin resistance. भाई यही आगे जाके फिर कीटोन्स बनेंगे आपके, और you will end up with high ketone levels. ठीक है, so basically insulin resistance की वजह से what is happening? Number one, gluconeogenesis cannot be controlled. Number two, the glucose uptake is not there. Just wait. Okay, we'll answer this. We'll look into this. Okay, just wait. When we'll come to the laboratory evaluation, then I'll tell you how to measure insulin and how to measure the glucose levels. Okay, and these are the basic three pathogenesis. Okay. Acha. Most of the evidence favors the view that ultimate triggering event is impaired insulin secretion, which when superimposed on background of insulin resistance leads to overt type 2 diabetes mellitus. But again, it's only a theory. कि एक इंडिविजुअल में दोनों भी हो सकता है. ठीक है, एट टाइम्स देयर कैन बी बोथ present in your body. There is resistance to insulin as well, and there is impaired secretion as well. Insulin resistance is neither necessary, very important words beta, insulin resistance is neither necessary nor sufficient for development of type 2 diabetes mellitus. ठीक है, it's not mandatory कि होगा ही होगा. ठीक है, there can be only inadequate secretion, there can be only insulin resistance, and there can be both in an individual. Although most patients with type 2 diabetes mellitus had some degree of insulin resistance, there are patients with a confirmed diagnosis of diabetes who had no evidence of insulin resistance, as I told you earlier. These individuals remains normoglycemic by compensating for the reduction in insulin sensitivity with the increased insulin secretion. Obviously, आगे resistance होगी तो पीछे उस चीज की secretion बढ़ जाती है. In summary, the bottom line is insulin resistance is an early and characteristic feature of the natural history of type 2 diabetes in high-risk populations. Overt diabetes develops only when the beta cells are unable to appropriately augment their secretion of insulin to compensate for the defects in insulin action. The basic mechanism, again and again, I'm repeating because it's a very important exam question, and more than your exam, obviously being a doctor, you should have this concept very clear. ठीक है, type 2 diabetes में, again I'm repeating, insulin resistance भी हो सकती है, inadequate insulin secretion भी हो सकती है, and they can be both present in a single individual. ठीक है, जेनेटिक्स की डेप्थ में जाने की ज्यादा जरूरत नहीं है आप लोगों को. फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स of individuals with type 2 diabetes are almost 3 times more likely to develop the diabetes. ठीक है, आप लोगों के पेरेंट्स हैं, भाई बहन हैं, अगर ये अफेक्टेड है, if
if your siblings are affected, if your parents are affected, there are 3 times high chances that you may also end up with diabetes mellitus. It has also been shown that concordance rates for monozygotic twins, which have ranged from 60 to 90%, are significantly higher than type 1 diabetes mellitus. So genetically, इसका rate आपका ज़्यादा होता है type 2 diabetes mellitus का. It's a more strong genetic component compared to type 1 diabetes mellitus, the type 2 one. Okay. Now, I will go through these slides. These are just slightly, इसमें आपको रट्टा ज़्यादा लगाना पड़ जाता है. ये कि मैकेनिज्म क्या है? मैकेनिज्म ऑब्वियसली 2-3 होते हैं. इसकी बहुत डेप्थ में नहीं जाने की जरूरत. ठीक है. नॉन एंजाइमेटिक ग्लाइकोसाइलेशन हो जाती है. When obviously glycosylation is there of different body parts, different cells in your body, then the normal mechanism is disturbed because of the high level of glucose in your blood. ठीक है. Glycosylation occurs in different parts of your body, different cells of your body, और उसकी वजह से फिर उसके नॉर्मल मैकेनिज्म्स डिस्टर्ब हो जाते हैं. फॉर एग्जांपल, कैन एनीबॉडी गिव मी एन एग्जांपल वेयर कैन ग्लाइकोसाइलेशन अकर, व्हिच ऑर्गन्स? Okay, HbA1c is a test. Kidney. Okay, that's the right answer. That's a common answer. Blood vessels के भी हो सकते हैं, न्यूरॉन्स के भी हो सकते हैं. ठीक है. किडनी इंटरस्टिशियम में हो सकते हैं मोस्ट कॉमनली. तो क्या होगा फिर? वो जो नॉर्मल मैकेनिज्म है, अब किडनी आपकी नॉर्मली जो चीजें फिल्टर करती है, सपोज इट एंड्स अप ग्लाइकोसाइलेटेड, देन व्हाट हैपेंस? वो नॉर्मल मैकेनिज्म उनका डिस्टर्ब हो जाएगा, फिर ग्लूकोज भी आना शुरू हो जाएगा यूरिन में, फर्दर डैमेज होगा, यू विल एंड अप विद डायबिटिक नेफ्रोपैथी एंड यू विल स्टार्ट सीक्रेटिंग और एक्सक्रीटिंग proteins in your urine. ये हम लोग का मंडे का टॉपिक है. We'll do this on Monday, the complications of diabetes. Today I'm just touching upon it. ठीक है. एक्टिवेशन ऑफ प्रोटीन काइनेज हो जाता है. अगेन इट लीड्स टू डिफरेंट मैकेनिज्म, जिसकी वजह से आपका ये सारे आपके जो साइटोकाइंस हैं वो सब एक्टिव हो जाते हैं और साइटोकाइंस डैमेज करते हैं सेल्स को आपके. देन द एक्सेलरेशन ऑफ एल्डोज रिडक्टेज पाथवे, ये भी इसको वो कर लेंगे हम लोग मंडे वाले लेक्चर में. we'll discuss this part in detail because all these 3 leads to complications of diabetes. Today we'll stick to type 1 and type 2 diabetes. On Monday, inshallah, we'll discuss the complications in details. Okay. The common thing in all the above 3 points is oxidative stress seems to be a theme common to all 3 pathways. ये कैसे होता है? We'll discuss this on Monday. ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होती है, साइटोकाइंस रिलीज होते हैं, टॉक्सिक रेडिकल्स रिलीज होते हैं बॉडी के अंदर, वो आपके डिफरेंट सेल्स को डैमेज करना शुरू कर देते हैं. एंड द मैकेनिज्म, द नॉर्मल फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म ऑफ दोज सेल्स और दोज ऑर्गन्स आर डिस्टर्ब्ड एंड यू एंड अप हैविंग लीथल कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायबिटीज मेलिटस. Okay. We have almost discussed this slide. In chronic hyperglycemia, some of the excess glucose combines with free amino acids on circulating or tissue proteins. What happens then? This non-enzymatic process initially leads to formation of early glycosylation end products in the glomeruli of the kidneys. As most of you rightly answered my question, kidneys में होता है बहुत commonly. Later क्या होता है फिर? Advanced glycosylation end products होते हैं. शुरू में early होते हैं. If the diabetes is uncontrolled, if the patient is not responding to treatment, if the patient is not listening to the doctor, a non-compliant patient who is not going for a walk, who is not controlling his diet, who is not taking the prescribed medications, what happens? Ultimately, it's advanced glycosylation end products are formed, which is irreversible. Then the patient will go towards the complications. ठीक है. रीनल इंसफिशिएंसी में ये बढ़ जाते हैं, इसको हम मंडे को और डिटेल में देखेंगे. नेट इफेक्ट इज टिश्यू accumulation of the advanced glycosylation end products that contributes to associated renal and, as most of you answered, blood vessels as well. Microvascular complications भी होती हैं, which can affect your retina, which can affect your kidneys, which can affect other body parts. ठीक है. अच्छा, probably we're close to the end of the presentation now. अच्छा, just wait. Okay, a brief summary of what we have done. ठीक है. Clinical onset of type 2 diabetes mellitus and type 1 diabetes mellitus. ठीक है. Onset में क्या है? It occurs usually in childhood, not always. Type 2 diabetes occurs usually in adults. ठीक है. Usually type 1 diabetes आपको lean individuals मिलेंगे. ठीक है. दुबले होंगे ज्यादातर, हमेशा नहीं बेटा, याद रखना इसको. ठीक है. अच्छा, टाइप 2 में वास्ट मेजोरिटी, ऑलमोस्ट 80% आर ओबीस. ठीक है. फिर डिफरेंट पॉइंट्स है इसके. डायबिटीज एक ऑटोइम्यून होता है, एक में आइलेट सेल एंटीबॉडीज नहीं होती हैं, एक में एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती है. द मेजर कॉम्प्लिकेशन ऑफ टाइप 1 डायबिटीज इज डायबिटिक कीटोएसिडोसिस. ठीक है. टाइप 2 डायबिटीज की सबसे मेजर कॉम्प्लिकेशन क्या है? नॉन कीटोटिक हाइपर ऑस्मोलर कोमा. ठीक है. फिर जेनेटिक्स में डिफरेंसेस हैं, पैथोजेनेसिस में डिफरेंसेस है. यू डोंट हैव टू स्टडी द होल टेबल, जस्ट द मेजर पॉइंट्स. ओके. नॉट टाइप 1 डायबिटीज में मस्ट रिमेंबर द पेशेंट विल ऑलवेज बी ऑन
on insulin. Okay, exogenous insulin. Name one famous personality who has type 1 diabetes. Anybody? A cricket player, Wasim Akram. Okay, he has type 1 diabetes. During matches, whoever follows cricket must have seen him during breaks and taking biscuits in the dressing room or going to the dressing room and having something to eat, because in अंदर ये होता है कि they are on exogenous insulin. So if he doesn't take his meal on time, or any type 1 diabetic for that matter, so they have to take something. Otherwise, they may end up with hypoglycemia. Okay, so a very bad disease. Acha. Now I've already answered this question, but just for your knowledge, fasting glucose of a 48-year-old male during his annual checkup was found to be 142. He was advised retesting by HbA1c. The result was found to be 6.8% by HbA1c. Now he wants your opinion, which of the following is the best option for this patient. I'll explain you this slide in detail. In this particular patient, the diabetes mellitus is confirmed because both HbA1c and fasting glucose are deranged. Okay. Now, criteria for diagnosis of diabetes. This is interesting and very common. Obviously, being a medical student as well, you have to know this because your family members, your friends may ask you, and they may share their reports with you. ठीक है, होता क्या है? Fasting blood glucose होता है, random blood glucose होता है, and HbA1c होता है. There are three common tests which are done in to diagnose or treat diabetes. Okay. When we talk about fasting plasma glucose or fasting blood glucose, it should be greater than 126 if you want to label somebody as diabetic. Then there are 2-hour plasma glucose test or OGTT. ये मैं आपको आगे बताता हूँ इसमें क्या होता है. ठीक है. अच्छा, HbA1c का कट ऑफ क्या है? 6.4 भी कुछ लैब्स रिपोर्ट करती है, कुछ 6.5% करती है. If somebody has HbA1c levels of greater than 6.5, that patient has diabetes mellitus. ठीक है. अच्छा, होता क्या है? If one of these is higher than the cutoff value, repeat the same. Example, if fasting blood glucose is greater than 126, then repeat fasting blood glucose. Okay. If both tests are higher, then there is no need to repeat anything. The patient has diabetes. Then there are pre-diabetic ranges as well. Pre-diabetic ranges कौन सी होती है? If somebody has greater than 126, he has diabetes. Somebody has between 100 to 126, it is called impaired fasting blood glucose. ठीक है. और random में अगर 140 to 200 के बीच में होगा, that is impaired glucose tolerance. And 5.7 to 6.4 HbA1c levels are impaired. अभी हम इसको पक्का कर लेंगे, don't worry. ठीक है. अच्छा, इंडिकेशंस ऑफ OGTT मैं आपको बाद में कराऊंगा. पहले मैं आपको टेस्टिंग का एक बार रिवाइज कर देता हूँ. अच्छा, नाउ लेट मी गो टू द अदर स्लाइड फर्स्ट. अच्छा, नाउ you tell me first. Somebody answered this question. Which 3 are the common tests done in diabetic patients to diagnose as well as treat diabetes? Fasting plasma या fasting blood glucose, random and HbA1c. ठीक है. OGTT बेटा उसमें नहीं आएगा. अभी मैं OGTT की यूटिलिटी आपको बताता हूँ. ठीक है. होता क्या है? अच्छा, nowadays physicians या endocrinologists are mostly prescribing fasting and HbA1c. Random इस वजह से वो ज्यादा नहीं करते हैं कि random में there tend to be a lot of variation. किसी ने बहुत heavy meal लिया है तो उसका different आएगा, किसी ने light meal ली है उसका कम आएगा, किसी ने 1 घंटे बाद कराया है, his levels would be different from the one who has got it done after 2 hours or 3 hours. Random तो सारी होता है ना, random is random. ठीक है. So nowadays mostly the endocrinologists basically go for fasting blood glucose levels or HbA1c levels to diagnose. अब सुन लो इसको गौर से, ठीक है, ताकि आप लोगों का पक्का हो जाए. Fasting blood glucose and HbA1c, if both are above the cutoff, fasting greater than 126, HbA1c greater than 6.5 or 6.4, if both are on the higher side, the patient has diabetes mellitus. ठीक है. If one of them is on the higher side and the other one is on the lower side or normal range, then repeat the one on the higher side after 1 week or 2 weeks. Okay. फिर वो किस तरह आता है, फिर उसके accordingly आप decide करोगे. Now let's suppose the values are within the impaired range. Now what is the impaired range for fasting? Anybody? I just showed you the slide. Fasting blood glucose में what is the impaired range? Very good, Salman. 100 to 126. ठीक है. ठीक है, 100 to 126. All of you have answered correctly. ठीक है, that is the impaired range. Impaired में आप क्या करोगे? Now somebody was writing OGTT. जब impaired किसी का आता है, then you go for OGTT. Okay, OGTT is not the first line investigation. First line investigations are fasting blood glucose, HbA1c, and sometimes random blood glucose. ठीक है. OGTT is the second line. Suppose somebody has impaired levels, then you go towards
OGTT. Okay, now let me go to the slides again. Now there is OGTT. Plasma fasting glucose levels between 100 and 126. ठीक है, यानी कि impaired ranges की. ठीक है, you're not basically certain कि ये normal है या abnormal है. It's falling between the impaired range. अच्छा, नाउ कुछ रीसेंट गाइडलाइंस ये कह रही है कि 100 भी नहीं, जिसका 95 से ऊपर भी है, लेकिन वो भी डॉक्यूमेंट नहीं हुआ इतना, कि जिसका 95 से ऊपर भी है उनको भी रिपीट करा लेना चाहिए, ओजीटी करा लेना चाहिए. अच्छा, पेशेंट्स विद फैमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज मेलाइटस. ठीक है, पेशेंट्स विद प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ लार्ज बेबी, सपोज शी इज अ वुमन हु हैज हैड लार्ज बेबीज इन द पास्ट, मल्टीपल प्रेगनेंसीज हो चुकी हैं. ठीक है, तो ये सारी इंडिकेशंस है फॉर ओजीटी टेस्टिंग. काउंटर इंडिकेशन क्या है? सपोज द फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज इज ग्रेटर देन 126. ऑब्वियसली इसको आप ग्लूकोज तो नहीं पिलाएंगे ना, वो तो और बिगड़ जाएगा फिर उसका ग्लूकोज. ठीक है, उसकी डायबिटीज और खराब हो जाएगी. सो दैट इज अ काउंटर इंडिकेशन इफ somebody has greater than 126. ठीक है, if his HbA1c is also normal, patient has diabetes. If his HbA1c is normal and fasting plasma glucose is greater than 126, repeat fasting blood glucose after 1 week. ठीक है, don't go for OGTT. Okay, that's a contraindication. Clinical stages. So a patient can be normoglycemic, a patient can have impaired glucose regulation, जिसके अंदर फास्टिंग में भी होगा और रैंडम में भी होगा. फास्टिंग की रेंज है बिटवीन 100 टू 126, रैंडम वाली रेंज है बिटवीन 140 टू 200. दैट इज impaired glucose tolerance. Then come to diabetes mellitus. In diabetes mellitus, you can classify it as diabetes mellitus not requiring insulin. ठीक है, बिल्कुल बेसिक डाइट से मैनेज हो जा रहा है, बिल्कुल बेसिक आपकी मेडिकेशन से हो जा रहा है मैनेज. ठीक है, या वॉक से, एक्सरसाइज से, बेसिक ओरल मेडिकेशन से मैनेज हो रहा है, इंसुलिन की जरूरत नहीं है आपको. देन डायबिटीज मेलाइटिस रिक्वायरिंग इंसुलिन फॉर कंट्रोल, एंड देन देयर इज डायबिटीज मेलाइटिस रिक्वायरिंग इंसुलिन फॉर सर्वाइवल. नाउ व्हिच टाइप ऑफ डायबिटीज इज द थर्ड बुलेट? डायबिटीज मेलाइटिस रिक्वायरिंग इंसुलिन फॉर सर्वाइवल. एनीबॉडी? वेरी इजी. टाइप 1 डायबिटीज. वेरी गुड मिन्हा. ठीक है, अधिका एंड एवरीवन. ठीक है, आप लोग का आंसर ठीक है. The concept is clear. It means आप लोगों का concept clear है. ठीक है, डायबिटीज मेलाइटिस रिक्वायरिंग इंसुलिन फॉर सर्वाइवल. दे कैन नॉट सर्वाइव विदाउट इंसुलिन. ठीक है, इनको इंसुलिन लेना ही लेना है. टाइप 2 डायबिटीज में व्हाट हैपेंस? इनिशियली आप पेशेंट को एडवाइस करते हो डाइट कंट्रोल, रेगुलर वॉक. ठीक है, चिकना मत खाना. आप ओपीडी में आपके पास पेशेंट आएगा, यू वुड से आप चिकनाई मत खाया करो, आप जो है वो मीठा मत खाया करो, आप कंट्रोल डाइट रखो. देन यू विल एडवाइस हिम रेगुलर एक्सरसाइज एंड वॉक. उसके बाद भी वो कंट्रोल नहीं होता है, यू विल गो फॉर ओरल मेडिकेशंस. Despite of that, if it's uncontrolled, then you will go for insulin. Okay, but that insulin will be for control of diabetes, not for survival. Survival is there in, हाँ, कभी कभार होता है कि at times the type 2 diabetes is so uncontrolled and it has been so long lasting for 30-40 years that now the patient requires it for survival. लेकिन type 1 में you have to take insulin. There's no other option. Okay. Now, the clinical features, very simple. You must have heard this 100 times in the past as well. Type 1 diabetes किस तरह होता है, present करता है? Polyuria, polydipsia, polyphagia. Patient usually will come with these complaints, and if not controlled, if not given insulin, what will happen? The patient will end up in diabetic ketoacidosis, all resulting from the metabolic derangements. ठीक है, वो ये complications में हम study करेंगे ketoacidosis में क्या क्या होता है on Monday. ठीक है. ठीक है, this is probably the second last slide, kind of an algorithm where everything is summarized. How does insulin act? As I showed you in one slide, it acts on the adipose tissue, it acts on the muscles, it acts on the liver, it helps in the uptake of glucose in these parts of the body. It helps in decreasing gluconeogenesis. It has an effect on glycogen synthesis. Ultimately, what happens? If not controlled, it can have ketoacidosis. The patient can have diabetic coma. There can be volume depletion because of polyuria, polydipsia. A very comprehensive diagram, a nice way to recall everything, or just before your exam to revise everything. Okay? The net result is obviously, the reason is the bottom line is the underlying cause behind everything is hyperglycemia, uncontrolled hyperglycemia, that is leading to all these hazards basically. Okay, now ठीक है, पैथोजेनेसिस है, लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस है, ये हम अगली उसमें करेंगे इंशाल्लाह ज्यादातर. ठीक है, ये सब समरी ही है उसकी. ठीक है, एनी क्वेश्चंस यू हैव? ठीक है, दिस वाज द लास्ट स्लाइड. ठीक है,
I'll just repeat, just take 2 minutes more to repeat everything ताकि आप लोगों का ये पक्का हो जाए और फिर मंडे को फिर हम कॉम्प्लिकेशंस कर लेंगे तो योर डायबिटीज वुड बी इंशाल्लाह रेडी फॉर योर एग्जाम्स। आप लोगों को ऑलमोस्ट याद हो गया होगा अब तक, ठीक है। टाइप 1 डायबिटीज इंपॉर्टेंट है, टाइप 2 डायबिटीज इंपॉर्टेंट है। Type 1 is mostly autoimmune along with environmental and genetic causes. Type 2 is basically environmental and genetic. Environmental में the most common in type 2 is obesity, but it's not necessary every patient should be obese, ठीक है। अच्छा, type 2 में there are basically there can be two metabolic defects. Can anybody answer me कि कौन से 2 metabolic defects होते हैं? क्या क्या metabolic mechanisms disturb हो जाते हैं type 2 diabetes में? Anybody? Insulin resistance, and which is the other one? Insulin inadequacy. Very good, very good. Hashir, beta cell dysfunction is obviously disturbed, ठीक है। So your basic concept is there, ठीक है। Then coming to the symptoms, polyuria, polydipsia, polyphagia, complications हम मंडे को कर लेंगे। Now lastly the laboratory evaluation, ठीक है। laboratory evaluation में क्या क्या करते हो आप, ठीक है। laboratory evaluation में आप which are the 3 tests you do, ठीक है। HbA1c, fasting blood glucose, random blood glucose, ठीक है। if out of fasting blood glucose HbA1c किसी का आप करवा रहे हो, if both are deranged, the patient has diabetes. If one is on the higher side, the other one is normal, then repeat that one after 1 week or 2 weeks जब भी आप repeat कराओ उसको, ठीक है। if the patient has अच्छा इसको करते हैं, if the patient has impaired range, ठीक है। अगर उसके 100 से 126 के बीच में होता है या 5.7 से 6.4 के बीच में HbA1c होता है, देन गो फॉर OGTT टेस्टिंग, ठीक है। डोंट डू OGTT, इट्स टोटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड इफ द पेशेंट हैव फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल्स ग्रेटर देन 126, ठीक है। अच्छा, कंट्रोल डायबिटीज कब होती है? इंसुलिन के साथ आपका जो है रेंजेस उसकी डिफरेंट होती है। यू नीड टू हैव द रेंज बिलो 100 इन फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज, बिलो 140 इन रैंडम ब्लड ग्लूकोज, उसकी फिर पूरा एक क्राइटेरिया होता है, ठीक है। लेकिन आप इसमें थोड़ा सा पेशेंट को मार्जिन दे देते हो। यू डोंट हैव टू बी वेरी स्ट्रिक्ट इन क्रॉनिक पेशेंट। सपोज द पेशेंट हैज क्रॉनिक डायबिटीज, तो अगर उसका कट ऑफ बुक के अंदर 140 मेंशन्ड है या 150 155 मेंशन्ड है, तो इवन 160 भी आ रहा हो तो उसका आप ज्यादा चेंजेस नहीं करते हो। यू जस्ट एडवाइज द पेशेंट कि you should control your diet, you should take your drugs on time, you should control your diet, you don't go for very high intervention in their overall prescription, ठीक है। बार बार उसको चेंजेस नहीं करते हो आप, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड बेसिकली कंट्रोल डायबिटीज मेलाइटिस। नाउ समबडी आस्क्ड मी एट द स्टार्ट ऑफ प्रेजेंटेशन, हाँ बेटा वी हैव टू रिपीट, ठीक है। वी हैव टू रिपीट आउट ऑफ दीज 2 टेस्ट, विच एवर इज एबनॉर्मल यू हैव टू रिपीट आफ्टर 1 वीक 2 वीक्स 3 वीक, आपको उसको रिपीट करना पड़ता है, ठीक है। हाँ, घर पे ग्लूकोमीटर है, यू आर रेगुलरली मॉनिटरिंग योर फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज विद योर ग्लूकोमीटर एट होम, एंड एवरी टाइम इट्स शोइंग हायर देन 126, देन ऑब्वियसली यू हैव डायबिटीज। फिर HbA1c को बाद में कर सकते हो फॉर मॉनिटरिंग पर्पस। HbA1c का फायदा ये होता है पेशेंट डजंट हैव टू फास्ट, तो वो एक ट्रबल जो होता है पेशेंट को वो नहीं हो पाता, ठीक है। प्लस फिर 3 मंथ्स का एक साथ आपको रिजल्ट मिल जाता है, ठीक है। अच्छा, लास्ट एक चीज में जो बोली थी किसी ने, हाउ डू वी चेक इंसुलिन रेजिस्टेंस, ठीक है। फॉर दैट बेसिकली होता ये है कि यू नीड टू गेट द इंसुलिन लेवल्स डन। इट इज डन इन मोस्ट लैब्स, डाओ में भी होता है हमारे पास। द पेशेंट बेसिकली फास्ट एंड यू वुड सी दैट द पेशेंट, you will take the insulin sample as well as the glucose sample at a common time, both the samples. You would see that the insulin is slightly on the higher side, but despite the insulin being on the higher side, the glucose is also on the higher side, ठीक है। you take the simultaneous sample of both glucose and insulin. Now you have to see that by checking the insulin levels, you will see that there is no problem in the inadequacy of insulin. It means insulin is being produced, but natural problem कहाँ है? इसका मतलब रिसेप्टर पर है, क्योंकि हाइपरग्लाइसीमिया भी उसके अंदर हो रहा है despite high insulin levels. So to rule out insulin resistance, you have to get the sample of insulin and blood glucose at the same time. Both will be on the higher side. It means the patient has insulin resistance. समझ गए हो? ठीक है बेटा। So next time we'll do complications inshallah on Monday, and then your diabetes mellitus would be complete inshallah. ठीक है, thank you very much.